नमस्ते दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। इसके आगे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का वीडियो देखने से ही आपका यो हिस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का। और आइए चलते हैं, हम हिस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द हिस्कियन हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द इक्विलिब्रियम चेंजिंग द कंजम्पशन इनकम ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बट द कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर नॉर worse than before. That is, if the actual income increased due to the depreciation of a commodity is mitigated by the reduction in the same amount of monetary income, then the former state of satisfaction of the consumer will be maintained. Only he will buy the cheaper item in bulk as a substitute for the expensive one. So also, although the Hicksian project caused a change in the equilibrium point of the consumer, यानी कि एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से, चेंज होने से कंज्यूमर का कंजम्पशन पर और इनकम पर क्या चेंज होता है, इसको ही हम हिस्कियन हाइपोथेसिस में देखेंगे। बट द कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर नॉर वर्स देन बिफोर, यानी कि इसके आगे वाले सिचुएशन में भी कंज्यूमर जो बेस्ट होता है और नॉट वर्स होता है। इट्स नाइदर बेटर नॉर वर्स देन बिफोर। दैट इज, इफ द एक्चुअल इनकम इंक्रीज ड्यू टू द depreciation ऑफ a commodity is mitigated by the reduction of in the same amount of monetary income, then the former status of destruction of the consumer will be maintained. So, although the Hicksian project caused a change in the equilibrium point of consumer, so he is positioned in the same natural line or indifference line because the amount of satisfaction is the same. That is, the amount of consumer satisfaction does not change as a result of plan. The imagery help explains Hicksian substitution effect. एक डायग्राम के थ्रू हम इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझेंगे। यही था डायग्राम हिस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओ एक्स एक्सिस पर हमने एक्स गुड और ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई गुड को दिखाया है। तो आई सी था ये इंडिफरेंस लाइन, और पी एल इनिशियल बजट लाइन, पी एल वन, और ए बी जो लास्ट मोमेंट पे हम ड्रॉ करेंगे ए बी बजट लाइन। इसको हम अब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो चलिए, PL in figure 3.18 is the initial budget line. This budget line is drawn assuming that the price of the X and Y products and income of consumer are specific or constant. The PL budget line touches the indifference line IC at the Q point. As a result, at point Q, the consumer is consuming by purchasing OM quantity of X products and OY quantity of Y products. Now suppose the price of the X products has come down. As a result, the consumer was able to purchase more X products with a fixed income, due to which the budget line shifted from PL to PL1. Now suppose the price of X products has come down. As a result, the consumer was able to purchase more X products with a fixed income, due to which the budget line shifted from PL to PL1. The reduction in the price of X has increased the actual income and purchasing power of the consumer. Now, to know about the impact of the planned result, we need to mitigate this increased consumer income in such a way that he or she again rest in the same natural line, that each
his satisfaction remains the same. Now with the increased consumer income removed, the PL1 budget line has shifted parallel to the lower AV line. Now the new budget line AV touches the T point of the IC neutral line. So it turned out that due to the reduction of the consumer income by the amount of PA or L1B, who was positioned in the same neutral or indifference line IC, that is the amount of income reduction required to mitigate the increased income, is PA or L1B. Now the AV rate line or budget line indicates the new relative rates of X and Y products. Since the price of X has come down now compared to earlier, the consumer wanted to buy X more instead of Y. The figure shows that the consumer is equilibrium at point T by alerting the purchase amount of X and Y products. Purchase of X and T point OM1, purchase amount of Y is ON1. So the purchase of the X has increased as compared to the previous one. The purchase of Y has come down. Equilibrium point T, there is no change in consumer satisfaction due to being on the same neutral or indifference line IC where there is no change. Hence the change from Q point to T can be called substitution effect. The effect of substitution effect, the purchase of X good quantity increase in MM1 and Y good decrease in NN1. So while Hicks counterplantation changes the equilibrium state of consumer, the consumer remains in the perfectly neutral line. So यही था हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सबको समझ में आया होगा आपको। तो ये टॉपिक थोड़ी हार्ड होगी, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखिएगा, नोट्स लिख के पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है ये, यानी कि PL इनिशियल बजट लाइन है और PL1 सेकेंड बजट लाइन है। और जब Q पॉइंट पर एक X गुड OM और Y गुड ON खरीदता है और OM1 पर ON1 और OM1 गुड्स खरीदता है, X गुड और ON1 Y गुड खरीदता है। IC लाइन जो है वो QT पर टेस्ट करके IC होता है, और जो न्यू बजट लाइन है AV, वो भी T पॉइंट पर ही टेस्ट करता है IC का। रिलेटिव बजट लाइन है ये AB। यही था आज का हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आज पढ़ लिया है। एंजल कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। एंजल्स का जो लॉस एंजल्स ने दिया था वही कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे।